we don't mind, you want to argue, you argue, ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کون argue کرے. جی آپ بتائیے کون سا پیج؟ جی سر پیراگراف 35 میں لوٹ 35 منٹ پیج 1993. پیراگراف 35 جی ملو may I read ملو. Admittedly, the provincial government has power to make laws for maintaining law and order situation in the province, and to the extent of its territory, there is no limitation on its power to make laws as far as subject under discretion is concerned, except that no law shall be made which is against the fundamental rights guaranteed by the Constitution, including Article 9, 10A and 24 thereof. It has been noted earlier that اگلا yes, اور اس کا 35 and 49 پیرا 49 میں 49 اس میں جو آرڈر فرمایا اور فائنلی ڈائریکشن فرمائی پیج 49 پہ ہے. ملٹ اگر مجھے اجازت دے تو میں پڑھ دیتا ہوں, نہیں تو جناب خود دیکھ لیں. Thus in view of the above discussion, the following order is hereby passed. Number 1, the court in exercise of jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution has jurisdiction to enforce fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution, as it considers that a question of public importance involving enforcement of the fundamental rights enshrined under a Constitution, which is Article 4, and with fundamental rights under Article 9, 10A, 14, 15, 17, 18, 24 and 25 of the Constitution have been violated. The incumbent provincial government has failed to establish writ of law in the province, on account of which the fundamental rights of the citizens noted here and above have been violated. The people of Balochistan also include civilians, members of the law enforcement agencies, that is the police. ٹھیک ہے, خاص بات آپ بتائیں نا. فنڈامنٹل رائٹس کا سارا ہے تو ظاہر ہے تو ہم آپ کو آبجیکشن تو ہم نے اوور رول کر دیا نا. جی سر وہ اوور رول جناب, تو پھر اس کی ریلیونس نہیں رہی نا. جو مینلی ہم نے تو آپ کی انٹرٹین کر فرما لی. جی سر ابھی نمبر آج لگا نہیں ہے, لیکن ڈائریکشن جناب نے کل آرڈر فرما دیا تھا کہ نمبر لگائیں اس کو, وہ تین میں شاید لگ جائے گا. ان کی پٹیشن کے اوپر جناب نے وہ آبجیکشن جو تھا رجسٹرار کا, کل تو ہم نے شارٹ ایک ہی لفظ کا آرڈر ہے. جی سر وہ لیکن نمبر لگنا چاہیے لکھا ہے اور کچھ نہیں. جی مگر ہم نے کہہ دیا نا, وہ ہم نے مسترد کر دیے ہیں. آبجیکشن اوور رول ہو گئے تھے آپ کے کیس میں. جی سر لیکن آج لکھ دیں گے, فکر نہ کریں. جی سر ٹھیک ہے. لیکن اس میں جناب کو جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا, جو ڈائریکشنز مسنگ پرسنس کے حوالے سے تھیں وہ بھی اس میں ساری شامل ہیں کہ کس طرح آگے پروسیڈ کرنا ہے, کون کون وہ بتائیے وہ کہاں ہیں. جی وہ اس میں سر تو پھر کمیشن بنا ہوگا نا اسی آرڈر کی روشنی میں. پرانے جو کمیشن بنا ہے اس کا انفورس ڈسپیئرنس اس کا, وہ کب بنا ہے یہ بتائیں نا. وہ یہ جو آپ ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ جی سر وہ 2011 میں کمیشن بنا تھا. یہ اس کے ججمنٹ میں بتائیے. جی سر اس میں سر جو ہے ایک ہی کتاب ہے. یہ پیراگراف میں لوٹ جو پیراگراف اس میں 3 ہے, یہاں سے شروع ہے کہ 3. جی سر پیج 2020. کلنگز کی بات ہے زیادہ, مسنگ پرسنس کی بات کہاں ہے؟ کلنگز, ابڈکشن فار رینسم, سیکٹیرین کلنگز. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا مسنگ پرسنس کی بات, وہ کہاں ہے اس میں؟ جی سر وہ ساری اس میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے, یہ تو زیادہ تر ٹارگیٹڈ کلنگز ہے نا. جی رینسم, سیکٹیرین کلنگز. جی یہ پیراگراف 5 سر اگر دیکھیں گے, IDPs, we direct the government, پیرا 5 سے اوپر 3 لائنیں, we direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time پیراگراف کون سا پیج بتائیے؟ کون سا ہے یہ؟ page 2005 آرڈر آف دی کورٹ نہیں, 2005 وہ سب پیراگراف 5 the federal government. جی جی فیڈرل گورنمنٹ سے اوپر کی 3 لائن اینڈ دین فیڈرل گورنمنٹ پیرا 5 میں بھی, اور پھر دین 6 بھی. یہ تو مرڈرز اینڈ کلنگز ہوئی تھی نا, سیکٹیرین وائلنس. جی لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے. جی نیکسٹ سر جو ایکسکلوسیولی مسنگ پرسنس کو ججمنٹ ہے سر دوسری, PLD 2014, یہ سو موٹو ایکشن لیا تھا آنریبل سپریم کورٹ نے. PLD 2014 سپریم کورٹ 305. ریلیونٹ اس کے پیرا ہے سر 16 اور 17.
पैराग्राफ 16 and 17 में लोग पेज है 320. As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture, it is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The Acting Defense Secretary through the law he apparently did his best, could not achieve the object for ठीक है, ये रेलेवेंट है. जी मैडम. हाँ ठीक है, ये तो रेलेवेंट है. जी मैडम. एनी अदर केस? जी सर. नेक्स्ट सर है इसका पैरा 16 भी एंड 17 भी सर. 17 जी. 17 में सर है और 18 में भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं. 17 पेज अगले पे है 321 पे. It may be out of context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so-and-so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. करेक्ट. आगे? जी सर. ये सर फिर इसको 18 में भी थोड़ा सा इस हवाले एनी अदर जजमेंट? जी सर. दूसरी जजमेंट सर नेक्स्ट है माय लॉर्ड आथर जज हैं धरना केस में फैजाबाद धरना केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 उसका एजेंसीज के रोल के हवाले से भी 318 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318. इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? पैरा 43 माय लॉर्ड. पैरा 43 42 में 42 से पेज 348. The report submitted पैराग्राफ इससे मिसिंग पर्सन का क्या ताल्लुक है? सर रोल ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि उनका कितना है, क्या रोल होना चाहिए, क्या उनका इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन अपने मैंडेट में रहे. स्पेसिफिकली कुछ है? स्पेसिफिकली मिसिंग पर्संस का तो एज सच नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसमें रेलेवेंट है वो जो अभी लोगों को हटाया गया है यहाँ से जो कर रहे थे वो प्रोटेस्ट जी, उनको तो प्रोटेक्शन मिलती है कि वो पैराग्राफ पढ़िए ना आप जी. लॉफुल असेंबली वो कर सकते हैं. ये देखिए पैराग्राफ 2 पढ़िए, पैराग्राफ 53 का जी. माय लॉर्ड 53 जी. सब 53 का 2 पढ़िए जी. Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. ये तो रेलेवेंट होगा फॉर द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग. माय लॉर्ड. फिर पैराग्राफ 3 भी पढ़ ले. जी सर. Protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which it must. I'm surprised you are citing this case. मैं तो हमेशा से इसकी मैंने आपको कहा था जी सर, हम तो पहले दिन से इसके साथ खड़े हैं. अगर हर इदारा अपने विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते जो कुछ हम देख रहे हैं या जनाब के पास आ रहे हैं और कोर्ट साथ. अगला बताइए. मैलोड इसमें जो मैं सिर्फ इस हद तक करना चाह रहा था, पैराग्राफ 2 में the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. वो रेलेवेंट नहीं है इस केस के लिए. ठीक है सर. मैं जनाब को चुका इस हवाले से. और सर इसमें हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं. PLD 2022 सिंध 264 जी 264 सर.
PLD 2022 Citation सिंध, बताइए। PLD 2022 सिंध 264, ये भी मिसिंग पर्सन्स के मुतालिक है सर। इसका लास्ट पैराग्राफ, टू 264 में लो, नहीं एक्चुअल क्या चीज पढ़े हम जैसे 266 पे लास्ट पैराग्राफ है, 266 लास्ट पैराग्राफ। The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. ये तो जनरल बातें जी, हैं, general तो कोई दो राय नहीं हो जी ठीक सकती है जी। ये 2 जजमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैं सर, वो भी मैं रेफर कर देता हूँ। मिसिंग पर्सन पे जी बताइए। मिसिंग पर्सन ये इसी हवाले से कि जो एक तो है सर PLD 2021 इस्लामाबाद पेज 1 जी मेलो रेलिवेंट पेज पैरा 3, 4 and 5 the incident, ये वो मतीउल्लाह जान वाला केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। The incident took place The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because ये आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये कल तो आप मतीउल्लाह जान वाला केस नहीं बता रहे थे, आज आप जजमेंट साइड कर रहे हैं। मैं तो बताना चाह रहा था, वहां तक पहुंचा नहीं था कि हुकूमत में कौन था। पहुंचा नहीं था वहां तक। दूसरी बात है कि मैंने कहा ये जिम्मेदारी फिर आप हुकूमत जिसकी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की, उनकी जिम्मेदारी, उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आए हूँ, वरना तो देखे ना सर बाकी लोग 4.5 महीने बाद इमरान रियाज बाहर आया। नहीं, आपका गलत फहमी है। ऑनरेबल कोर्ट की भी इंटरवेंशन थी, इसमें कोई शक नहीं है। नो, ये भी आपकी गलत फहमी है। कुछ फहमी तो हो सकती है, गलत फहमी शायद नहीं। आप सुनने ही हैं तो बता देंगे आपको। आप बेहतर जानते हैं। नहीं, हम बेहतर नहीं जानते। ये गलत फहमी या खुश फहमी या जो भी बात है, ये हो गई थी रिकॉर्ड, कैमरा लगा हुआ था। कैमरा लगा हुआ था जी, उसका रेफरेंस है जी। सीसीटीवी फुटेज। शायद कुछ और नतीजा ना निकलता। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं यू कॉट विथ योर हैंड इन द कुकी जार, तो आप वो फंस गए थे। सर इमरान रियाज वाले केस में भी फुटेज लगा हुआ था। प्लीज डोंट टेक द क्रेडिट, इट वाज एग ऑन द फेस and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 मिनट का केस ये सॉल्व होता था 2 मिनट में। नहीं, देखिए, या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐश कर लें। हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे। ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था। मैं वही गुजारिश, नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस। बस ठीक है, अच्छा, ओह तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो। ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था। She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना, उस वक्त करके दिखाएं।
अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊं कि जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता, आप कहें कि जी आज आपने क्या किया ये बताइए। सर मैं एक गुजारिश कर दूं, देखिए ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस। सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है। और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था, मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए। इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें, क्यों? ठीक है, वो आए सामने बात की, बिल्कुल क्यों? वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है। वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना। हमारा काम जरा सा देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है। अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए एफआईआर काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें। अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे। ये नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर। प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर, आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी, जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences। ऐसे कैसे बाहर जाते हैं? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा। 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months। फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा शायद वो। बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, मैं इस पे आगे चलता हूँ। शाहीन साहब, यू आर अब नाउ आई विल यूज अनदर वर्ड, कैन यू प्लीड अ केस ऑफ अ पर्सन नॉट बिफोर अस? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, who are you to plead his case? अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, नहीं, जो काबिल है, जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे। मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी करें ना। फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है, नहीं हमारा। देखिए अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा। हम ये कहते हैं माय लॉर्ड, कमीशन जब बनेगा, हद तक की जो पिटीशन थी ना जो आपने फाइल की, उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन के लिए वो लगी थी, वो दैट हैज बीन जी जी, वो तो फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे वो होंगे, वेट फॉर सम टाइम। अगर आप ये इंडिविजुअल केसेस करेंगे तो फिर हम ऑफिस ऑब्जेक्शन सस्टेन करना पड़ेंगे। हम आपकी पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन कंसर्न है मिसिंग पर्सन की, पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज। अगर आपके जहन में 2-4 ही लोग नहीं सर, ठीक है, नहीं 2-4 नहीं, सभी जो जिस के साथ कोई ज्यादती हुई है या मिसिंग में हैं या जिनके साथ कोई मिसिंग में रहे हैं, तो जनाब ओनली इन रिलेशन टू द सीएमए वो आपकी ऑफिस ऑब्जेक्शन। फिर अब आप तशरीफ रखें, हम दूसरों को सुन लेते हैं ना। नहीं सर, नहीं, मैं तो अपनी बात बस फर्दर एक्शन इज टू बी टेकन। वो देखिए ना, अभी एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर होगा ना अभी जब सर मैं तो जनाब के सामने अर्ज करूंगा, जनाब ने फैसला फरमाना है ना कि मेरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जनाब उसको नहीं इस काबिल समझते कि उसको पार्ट ऑफ माई प्रेयर या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और कौन सी नहीं होती, दैट योर लॉर्डशिप हैज टू डिसाइड। लेकिन मेरे जो सबमिशन है वो मैं जनाब के सामने पेश कर रहा हूँ। अब सर इसमें आपने कहा था केस लॉ साइड करना है। जी जी, केस लॉ एक जजमेंट में आपको अर्ज कर रहा था, वो 2018 सीएलसी कंसिडरेबल पीरियड उनको आने दें, उनको आपका तो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया ना। जी जी हो गया, ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, लेकिन मेन केस भी तो आपने सुन लिया है ना। मैं मेन केस के हवाले से सिर्फ एक जजमेंट और दे देता हूँ, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जस्ट फॉर कंसिडरेशन। नहीं, और पूरी बात कर लेना जी। तो शेख रशीद साहब ने आपको क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं कहा। जिस एक बंदे का मुझे कॉल आई, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, किसी ने मुझे फर्दर कॉल नहीं की। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं कि हम जी फला जगह गए, आप
آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے ڈیفینیٹلی, وہ خود کیوں نہیں کہتے؟ اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ اپنی وہ بات نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ بات کریں گے؟ جب الیکشن ہوا تھا, جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ وہ سر یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, obtain a وکالتنامہ and file a وکالتنامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی, ابھی تک تو کچھ نہیں پتا. آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا پا رہے. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے جناب کے سامنے. جب اس پر آپ تشریف رکھیں ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس صرف ایک ججمنٹ سے ریفر کر بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں میں نہیں بنانا چاہتا, میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی, please don't do this. نہیں سر جناب نے, میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر. 2018 CLC 1858 ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر, ایٹ پیج 1358. جی سر 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں, now can we go to the next case. تھینک یو. کتابیں اٹھا یہ امینہ مسعود صاحبہ جی, آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ, آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی CP 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ, ہماری میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں, تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا, افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا, اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سو موٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 پیٹیشن. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں, ابھی تک نہیں ہوئے. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ کوئی ریزن نہیں ہے. nobody told me ever کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا جی جی کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف, اس کو اٹھا لیا, مطلب یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی, اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ لارڈ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا, کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن, از اے کرنل ریٹائرڈ, اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب I'm just saying that why you think the state was involved, or you're not alleging it's a state? I think it's state because جو بھی later on 2007 میں 2006
में 11 में 8 में जो लोग रिहा होकर आए उन्होंने इसकी एविडेंस दी. The star witness was Imran Munir. देखिए दो तीन वजह हो सकती है ना. एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो गलत फहमी में किसी को उठा लिया, एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो फिर द मिनट दे रियलाइज यानी ये तो गलत उठा लिया, इसको छोड़ दो. या कोई मे बी ट्रम्प्ड अप चार्ज या जो भी उनके जहन में हो, जिसने भी ये काम किया कि जी ये ऊपर से हुक्म आया है कि इसको उठाना है, इस वजह से ये ज्यादा एक्टिविस्ट है, ये है वो है. तो आप जो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है. 2001 से लेके यहाँ पे एक वॉर एंड टेरर, तो या तो आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, मुजाहिदीन को, या क्या, तो फिर तो बात समझ आती है ना. वो तो एक सोशल वर्कर भी थे, उनका एक हॉस्पिटल भी था, वो आज भी चल रहा है. जो अपने I'm just trying to understand. I'm not saying कि नहीं उठाया है, मगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि वजह क्या हो सकती है. देखिए, जब तक इंसान को वजह ना पता चले तो फिर कल्प्रिट जो क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही होता है ना कि भाई किसको फायदा हो रहा है, तो उस तरफ जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. ठीक है, कि ये इसका कोई जातियात का झगड़ा था, या कोई जमीन का तनाजा था, या वो उसके खिलाफ बात करता था, तो उससे कड़ियां जुड़ती हैं. हाँ, ये पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं. तो मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई was he member of some organization which the government did not like, or any case like that? No sir, इस तरह की कोई बात नहीं थी. मेरे फादर इन लॉ ने जो क्या उम्र थी जब वो he was 41. आपका ये केस कमीशन में चल रहा है, ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, आपने कोई कमीशन ने 2013 में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था. क्या उसका क्या ऑर्डर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था. तो ऑब्वियसली क्योंकि है ऑर्डर आपने लगाया इसमें? नो सर, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑर्डर था, बिकॉज आपने लिखा है कि अर्लियर जो है प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किए हैं, 600 प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ने इशू किए थे. तो बिल्कुल, that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home किस जगह? on 30th July 2005. रावलपिंडी घर से निकले हैं. हाँ. और उनके दोस्त बस स्टॉप पे उनका वेट कर रहे थे. दोनों ने डेगू बस ली है. टू मीट. कहाँ जा रहे थे वो? पेशावर जा रहे थे दोनों. अच्छा, क्यों? उनके एक दोस्त है अब्दुल गनी, उनके साथ मिलने के लिए. तो जब उनसे भी राब्ता किया गया, अब्दुल गनी भाई से भी, तो उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे. आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज भी हैं, तो आप किसको सस्पेक्ट करती है? मतलब लास्ट आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जो एविडेंसेस हमें मिले थे जो कि रिलीज पर्सन्स की तरफ से थे, तो उन्होंने तो यही बताया था कि वो आईएसआई की कस्टडी में थे. उन्होंने देखा था जी, और वो ईद के दिन थे. पर्सन्स उनको जानते थे? जानते नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी उनका नाम पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उनके लॉयर ने मुझे बताया कि इस तरह से इमरान मुनीर ने मसूद जंजुआ को देखा है, और उन्होंने फिर वो सारी चीजें सामने आई. इस बात को कितना अरसा गुजरे? इसको 2007 में ये हुआ था, और उस वक्त 2005 से लेके 2018 तक तकरीबन मैंने 749 CMs डाली हैं HRC 965 में, और जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड से पर्टेनिंग नहीं थी. फिर एक जब JIT बनाते हैं ना, तो JIT में आपने कभी अपीयर हुई हैं, पार्टिसिपेट किया JIT में? सर, सब कुछ हुआ था, मगर JIT में ISI के और IB के सारे मेंबरान होते हैं ना. बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है उसमें, SSP लेवल पे या DIG लेवल पे. तो 8-10 लोगों की जो JIT बनती है, कभी आप पेश हुई हैं JIT में? बेशुमार दफा पेश हुई हूँ, रावलपिंडी में, CPO के ऑफिस में, कमीशन के अंदर, और हर चीज. सर, उस वक्त ये होता था कि तमाम केसेस जो कमीशन में चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे. तो उसमें ये हुआ कि जब वहां से डिस्पोज हुआ तो यहाँ से आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता वो डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो क्या रीजंस थी उसकी? उनका तो यही कहा है कि वो वज़ीरिस्तान में उनको जो है तालिबान ने और इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने मार दिया. बट ये कि उस वक्त के जो जजेस थे, जिस तरह जवाद ख्वाजा साहब क्या गए थे बलूचिस्तान? नहीं,
उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था क्योंकि वो उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे पाए थे, ना वो ये कह पाए थे कि कहाँ पर उनकी कब्र What do you है। want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Ms. Faisal Faraz, करें क्या बताएं ना। जो उनकी जो क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो कमीशन में तो वो सारे केस डिस्पोज ऑफ हो गए थे 2018 हमें में। बताइए ना, कमीशन को छोड़ दीजिए ना, अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि My lord, ये देखिए एक दो तीन बातें ना। एक तो ये आपने इस मौजूदा हुकूमत या इस मौजूदा हुकूमत के जितने भी अहम एहलकार हैं उनके खिलाफ तो एलिगेशन है नहीं। अब आपका एलिगेशन है कि 2005 में उनको गायब हुए वो 30 जुलाई 2005। 30 जुलाई 2005, तो इस बात को कितने साल हो गए? 15, 25 तो कितने साल हुए? 18 साल। जी सर, हाँ 18 इयर्स हो गए। 18 साल। उस वक्त 40 years एज थी उनकी। अब 18 इयर्स हम कोई ऐसी चीज बताएं जो कि कुछ हम मदद आपकी कर सकें, मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें? कोई या तो देखिए आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, इट्स फंडामेंटल राइट अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग। गलतफहमी हो सकती है क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से। जी, फादर इन लॉ आपका क्या कनेक्शन है आर्मी से? my father-in-law is a colonel retired. Actually, he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter, he met the president. क्या मिला उनको? क्या परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मिला क्या मुलाकात। उनको? मिला बताया क्या तो किया? उन्होंने ये उनको यही गलत बस आदमी है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं हमारे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे। फिर जी ये तो फिर हम क्या करें? कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप। एग्जैक्टली। And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा My है lord, जो पहले होता था। I don't know, I may be wrong. जी। मगर I've been Chief Justice Bulustan as well, so but तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो हम कर सकते हैं। आप क्या हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से। अगर सेकंड टाइम बिल्कुल, मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह आप से बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम through करेंगे। quite a lot of torture over these years देखिए, you have a lot of because experience. you know, You have more experience than us. exactly. तो अब आप बताएं, what shall we do for you? My lord, for my case, if for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह क्या की आप बात बताएं ना, कर वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। तो दोबारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट मैं करते हैं, I वही just लोगों want ने to know the decide truth. करना है। I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए, अगर वो दाना पर फास्ता किससे आप पूछे, उनकी किससे आप डेथ हो पूछे? गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में किससे आप मिलिट्री पूछे? से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर ये भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, जी, बिल्कुल। so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some Please, sir. information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about नहीं हम उन पे भी आते हैं ना, पहले we are पहले concerned आपका about पर्सनल one. कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है। Can we have a report if there is some information, My lord, I have taken down the details. and if whatever has happened, all she says is if I can know the truth of the matter. yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal.
ठीक है, there's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass a order, but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा AG साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं JIT में क्या है वो देखिए, वो JIT देखते हैं, इनको कम से कम जवाब दे देंगे वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं Exactly, होगा उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा. It will because be she's gone going through the same process. pain. Yeah. Now if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there is, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. my lord. ठीक है? My lord, तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront not only for her own husband but for others also. इसलिए मैं बोल रहा था appreciate that. कि जिसमें ऐसे वगैरह के लोग होते हैं वो अभी बता देंगे, 2005 वालों से जब कभी तारीख नहीं होगी जा जाएगा, इश्यू डिफेंस करेगा, ऐसा मिस्टर यूज करेगा. ठीक है? My lord. तो the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defense. My lord. ठीक है? These are the, or any other, It's Ministry of Interior essentially. and or Ministry of Prime Defense, Minister's office. जी. because she says that she's alleging it against Pervez Musharraf, so that comes Ministry of Defense. He was president at that time. but, Ministry of Defense. the Chief of Army Staff as well, so yes, Ministry of Defense. So let it be taken seriously, she just- and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, उन्होंने किया था, बता दिया. तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Yes. Musharraf at that time. Yes. And then He said as that well. we have no interest in And they him. said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So Still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on A behalf lot of these time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, Welcome. if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I am noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. My lord, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं, जी जी ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है नहीं? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में. जी बताइए. जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है. नहीं, जैसे शोएब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं. हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं. जी जी, ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए. हाँ जी, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए. जो बात है वो एक अलग इशू है. हमारा जो jurisdiction है वो habeas corpus की jurisdiction है. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है? habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है? That is, jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से. एंड नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर
پھر ہمیں جواب دیں گے نا. Exactly. اگر ہم ایک جنرل بات کہیں گے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ لارڈ اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کورٹ کیونکہ ہماری اس کی امیدیں بہت زیادہ وابستہ رہی ہیں اور تقریباً 18 میں سے 15 سال میں یہیں پر پیش ہوتی رہی ہوں فار ادر اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے اب ہر چیزیں دور بدلتے جاتے ہیں نا. جی کچھ لوگ مسنگ پرسنز آج بھی مگر وہ اٹھائے گئے ہیں آپ نے کہا 2005 میں یا 2002 میں, جی ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً اس حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ٹھہرے گی نا. تو Exactly. پھر بھی اگر آج یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھیں اس کو ذرا سا کلیریفائی کر لیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ٹائم نام دے دیں اور پیریڈز دے دیں نا جی تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو گئے پرانے مسنگ پرسنز, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. جی ایک دوسرا ہے کہ یہ چیز کو روکا جائے, ختم. بالکل بالکل. ایک ہے ان کو دستیاب کروایا جائے, وہ الگ ہم ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں, لاجکلی چلنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کم از کم پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید, اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا, رکوا تو دیں نا ساری باتوں کو, مسنگ پرسن کو رکوا دیں. بالکل سر, میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی تو نہیں بنی, آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی یہ پالیسی روک دی جائے کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ سٹاپ ہو جائے, تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in But accordance with if law you and give the statement today and then something happens tomorrow, My lord, then consequences will follow. It must- You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law and No, but we Take some instructions. we want it in writing. all right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. no, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan, So then I think. not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think. This country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کا اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی. دیکھیے یہ ذہنیت, جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے. That's right. جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. تو کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے,
جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think the state Some needs to be definite inclusive. statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنس کا, یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے sir, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. 11. So he should be now, what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے کمیشن سے آئے ہیں, رجسٹرار ہیں آپ کمیشن آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ, شریف ورک صاحب, محمد شریف ورک, محمد شریف ورک, یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر, تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. کتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میں اندازہ نہیں ہوتا, بتا ہوگا سیکٹری کو, مجھے پتہ نہیں, میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام نہیں سر کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا. بتائیں نا. کراچی میں ہمارے جسٹس آپ کی اینول رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں, منتھلی کرتے ہیں, کرتے ہیں, کوارٹرلی کرتے ہیں, منتھلی بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج ہماری تک؟ تو بڑی ماشاءاللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی, وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا ہے. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا میں ابھی آپ پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں ویسے ہی بتا دیجیے نا, مہینے میں کتنے ریکور کرا, کتنی دفعہ میٹنگ سر بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنیں, آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر. کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے, آئی بی سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے تو ہیں. پھر ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں, کیا ایوریج ہے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں سر, اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے, یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں. سر کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ سر ٹریسڈ کہہ لیں, ٹریسڈ کدھر آپ کی رپورٹ کدھر ہے؟ یہ ہے نا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, دکھائیے کیا چیز ہے. 91 دیکھ لیں وہ سارا اس میں دیا ہوا جو ان کے مطابق. دیکھتے ہیں نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, کسی کا نام بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ باقی یہ لکھا ہے آپ آج کتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ کے ریکارڈ میں؟ یہ لکھی ہوئی فگر ٹاپ پہ نا, بتا دیجئے نا. یہ جو ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں, کیسز ڈسپوزڈ آف اپ ٹو دسمبر 2022 7001, ڈسپوز آف سے کیا مراد ہے بھائی؟ یا ریکور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ مختلف قسم آپ کے پاس کیٹیگری ہونی چاہیے نا. دیکھیں جب ریکور ہوتے ہیں, بہت سے وہ ریکور ہوتے ہیں جن پہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں فلانا کیس میں کسٹڈی میں. اصل میں سر یہ 4 یہ اس کا مطلب یہ ہے رپورٹ اس میں نہیں ہے نا. جو اب آج کل مسنگ پرسن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس جو کیس آتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے ہمیں. آپ سے یہی تو پوچھ رہے ہیں, آپ کے پاس آج کل کیسز آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں سر. آپ کا سیکریٹریٹ کہاں ہے؟ سر یہ G91 میں سر. ہاں G91 یہ کیا گھر ہے؟ نہیں سر یہ سول ڈیفینس بلڈنگ ہے سر. اچھا, اس کے اندر ہے. نہیں تو آپ کے پاس فار انسٹنس دسمبر 2023 میں کتنی کیسز آئے ہیں فریش؟ سر یہ بتانے لگا ہوں 46 کیس آئے ہیں سر. فریش؟ جی فریش. اچھا, ان کا کیا بنا؟ سر یہ پروسیس شروع کر دیے نا اس کا ہمارا. اس سے پہلے ہم GIT بنواتے ہیں,
उसके बाद JIT वो AIT क्या चीज है? जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ये टीम, क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के, इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, ये मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में, इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम और, लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश आप होते भी हैं। केस में हैं, इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. ये हाँ? not at all. कोई sir. मुतमईन नहीं है, ये sir. dispose of की हैं. Honorable ने बड़ा नहीं, एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? dispose of जो है इसमें हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। satisfied, sir. Not at एक all. सेकेंड, एक सेकेंड, इत्तेजाज साहब आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? थोड़ी देर नहीं नहीं, बस बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं मुतमईन, बस बस ओके। अच्छा, एक रजिस्टर ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर, मैं भी नहीं। कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं, ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो हमारे पास मेरा सवाल सुने। 2011 से, सर। सुने, नहीं, आप देखिए रजिस्ट्रार हैं, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ आप रहे हैं ना, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास ये- फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? ऐसी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो सर ये 2005 से पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम आपको कोर्ट ने। ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है, आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके नहीं पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे अच्छा, हुए हैं। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्ला यासीन जई साहब और जावेद इकबाल और साहब। जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उसी के केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते अच्छा, हैं। और कोई रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जज साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और ये फ्रंटियर। यही मेंबर हैं जी फिर? जी 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 5 लोग हैं, हाँ जी। 4 लोग हैं? जी हाँ, हाँ, 4 हो गए जी, बिल्कुल। आर दे पेड और दिस वॉलंटरी वर्क? ये सब पे होता है सर, हाँ? पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं, उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेते हैं सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह है, यही है ना? उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा हाँ? क्यों क्या जवाब है? नहीं नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ, जी ये अटॉर्नी जनरल साहब से। उनका पैकेज तो वही होता है ना, जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up. The presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए। I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, it is whether quite post-retirement can they, if they are required to do any दोनों work. वो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कोई भी रिटायर होता है, जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन। Right. So I was not No, aware but of it, there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, that's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But if a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है।
ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? Interior, sir. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा। अभी हमारे एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने। आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी। विजिट भी किया है वो, आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी, बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे, अच्छा ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है, अच्छा। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अच्छा वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है, स्टार बनाया हुआ, ये कौन से केसेस जो क्लोज नहीं है रजिस्ट्रार साहब? क्या आपको ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Ever? जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है। My lord, I have this copy of the कह रहे हैं हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। दे दे दोनों 161 देना, मुझे देना जरा। उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है। My lord, मेरी ये जो जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Baluchistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Verk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था नहीं, कमीशन। प्लस कर दिया है टू ट्रेस वेयर अबाउट 30 into, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's, I mean, there's only this Commission will have its says that independent Huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट करे, वो बढ़ा देते हैं। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam जो कि 136 persons My lord, and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में। नहीं, tell us. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1,
I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that, that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. Ji, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired the na? Ji. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Acha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी, ये पब्लिक कब हुई है? Sir, ये फिर पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. The copies, कौन सा? Sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant padhe? Ji. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में, sir. Production orders were issued by the commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has
has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission... But without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now, the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 production orders have been issued to the relevant agencies. Only 51 have been complied with. If your lordship may kindly see एक production order जरा page 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing, that's the problem with the Commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस ये। सर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया। नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन। ये पूरी नहीं है। ये जो स्टारिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए, तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए। सर पूरी नहीं है, मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ, मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया। Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet Commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक one step at a time. जी। Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं। Have a look at the production order. जी सर। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सैंपल के तौर पे मैंने लगाया। My lord. हाँ तो वो ये कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है। सही बात है। तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट करता है। If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And if वो तो ठीक है ना, those powers were ever object is not to send people to jail. No, but the what I'm object saying is to, if the people are
illegally detained to set them Right. free. जी. वो तो बात की बातें हैं. Oh, I'm just. आप पनिशमेंट में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम पनिशमेंट में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I mean, check this is कर लें. 2020, नहीं, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं ये उनके सामने 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief तो Justice. उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट. आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें. जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा. हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उसी पे अटके हुए. नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ इसमें. कौन सा है? ये पेज 29. अब नंबर, अच्छा नील, पर नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20, हाँ मिल गया जी. उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रोपोज किया है कि ऐसा कमीशन बने. मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है. ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द petitioner therefore urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए, Ijaz, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो
کہ اس جو ان کی کمیشن ہے جو بنی ہوئی اس میں انہیرنٹ ڈسیبلٹیز اور ڈیفیکٹس ہیں. اعتزاز صاحب آپ میں آپ کو یہ عرض کرتا آپ ہوں چاہتے ہیں چیئرمین سپریم کورٹ کا سٹنگ جج بنے جس کے 2 سال ابھی بھی ریٹائرمنٹ میں باقی ہوں, تو وہ تو مناسب نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اپنی جج کے خلاف نہیں سر, میں عرض کروں اس کی وجہ یہ ہے یہ کمیشن جب بھی ریٹائرڈ جج کو معاف کیجئے کوئی نہیں سیریسلی لے گا, یہ بڑا سیریس میٹر ود ریسپیکٹ. Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years تاکہ وہ 2 سال کی ٹینیور میں وہ کچھ کر سکے. آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں. ہم یہ جو چیزیں یا تو پھر وہی کام ہوگا کہ وہ جج یا کام نہیں کریں گے اپنا جو کام کرنا چاہیے, یا پھر وہ کمیشن کا کام نہیں کریں گے. پھر آپ کا اعتراض یہی ہوگا کہ جی کیونکہ نارمل ڈے پہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کو جتنا کام ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہم نکال پاتے ہیں دن کو, ٹھیک ہے. تو وہ نمبر آف ججز کتنے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے, کتنے بینچز ہیں آپ کو پتہ ہے, کتنے پینڈنسی ہے آف دا سپریم کورٹ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ ضروری تو نہیں کہ سپریم کورٹ کے جج میں آ کر کے وہ ساری خوبیاں آ جائے کہ وہ کمیشن کا کام بھی کر لے. یہ ڈیڈیکیٹڈ کمیشن ہونا چاہیے جو فل ٹائم ہو, ناٹ پارٹ ٹائم. سپریم کورٹ کا جج کو آپ نے بٹھا تو دیا تو وہ کام کرے گا پارٹ ٹائم, تو نیچرلی پارٹ ٹائم ہی کر سکتا ہے, یا تو اس کو کہ اچھا آپ کیسز نہ چلاؤ بس یہی کام کرو. سر اس طرح تو اس وقت تو ہو ہی کچھ نہیں رہا نا, وہ پارٹ ٹائم بھی نہیں ہے, وہ فل ٹائم. آپ کے توسط سے انشاءاللہ بہتر کریں گے چیزیں, ایک دن میں تو نہیں ہوں گی نا, مگر ذرا سے بریدنگ سپیس ہم دینا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو. جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں, آپ ہی نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو. جی سر, میں کیا کہیں آپ کو, آپ کی حکومت نے, سوری آپ نے نہیں کیا تو اب آپ کی حکومت ہے, تھوڑی تو رسپانسبلٹی. سر یہ ریکریمنیشن وہ اب نہیں چھوڑ دینا, اب ہم تھوڑا سا ان کو موقع تو دینا کچھ بہتری لانے میں. میرا ذرا سن لیں جو اسٹرکچر میں جی. اب آپ نے جو دیکھا ہے نا, اس کے آپ نے جو پرپوز کیا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جی پاکستان بار, یہ سول سوسائٹی کے, آپ ذرا سنیے نا, ہم نے بہت دفعہ تجویزیں مانگی ہیں, وہ انڈیویجول پہ ہوتا ہے. کوئی پریزیڈنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے, کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے یار یہ کیا مجھے ایک کام کرنا ہے مفت میں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی دیکھیں ہم یہ برڈن اب پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بلوچستان, اب یہ اگر یہ باڈی میٹ ہی نہیں کرے گی, کبھی کام ہی نہیں کرے گی, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہونا چاہیے جو کہ اگر کام کریں. آپ اسمبلی نہیں کر سکیں گے, اتنے سارے ممبرز پورے پاکستان میں. کل کو کہے گا جی میں تو ریٹائر ہو گیا, وہ ایک ٹرم کا ٹرم ہوتا ہے, ہر سال الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشنیئرنگ میں لگ جاتے ہیں, پھر وہ کیسز بھی ہمارے سامنے نہیں کبھی چلاتے ہیں کہ جی اب الیکشن ہو رہا ہے آپ میرا کیس ارجن کر دیں. تو یہ اس میں ذرا سا ہم دیکھیں اعتزاز صاحب, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint ہوئی ہے. دیکھیے وہ 2 قسم کے کمیشن ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت, وہ پاور ان کا ہے, وہ گورنمنٹ کا ہے, ہمارا پاور ہے, گورنمنٹ کا, ایک آپ کا پاور ہے, آپ کی پاور کو ایکسرسائز کریں. اور میں اس میں ذرا ایک چیز جو میں نے سول سوسائٹی کے موسٹ پرومیننٹ اینڈ موسٹ افیکٹو بندے نامینیٹ کرنے کو کہا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, دی پاکستان بار کاؤنسل, presidents of 4 provinces. Why? Sir, they are, abhi ye baki dekh the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will, اور ہمارے بار ایسوسیشن میں ہر سال الیکشن ہو جاتا ہے, تو نیا بندہ آئے گا, کوئی ہمارا نیا مینڈیٹ لے کے, یہ ایک
roster of the bar elections competition में हो जाएगा. अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना वो तो उनका काम है, नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना. जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. आप ये दो देखें. Director General Center of the sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो schedule है 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है सर. We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है. PFUJ को भी मैंने इसमें PFUJ and 2 senior officers, senior most officers of the Inter-Services Intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें. अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें आज, we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. एक मिनट सलाउद्दीन, होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए. Monday को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. Tuesday को क्या? Yes. बेंच कंटिन्यू कर दी तो Tuesday को कर देंगे. उससे भी नहीं पता हम चाहते हैं. ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल. अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं. लिखें. Sorry, Salahuddin साहब, आप इस केस में? Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the road students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब, हमने विड्रॉ कर ली. These appeals have been withdrawn. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी. नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा. The report was furnished and it is on इसमें record. लिखिए, वो ऑफिस कौन है? स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर दें. ठीक है. ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं. इत्तेजाज एहसन फेडरल आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124. सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं. अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की. इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है. ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में. ये आते हैं, बताइए. तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे, and we will direct this commission to provide you with the information, and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report.
My lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3 जी my lord, ये withdraw कर दो 4 जी my lord, withdraw कर ले नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से Ji, my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted, the commission has furnished its report. So these petitions have become CPLA infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं, वो उन 3 का लिखें 2022, CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिख दें 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. Okay, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that my lord, it's and that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है उसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. वो तो law है. हाँ ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. First of others present, the Commission comprises of, we are informed that the Commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson है जावेद इकबाल साहब,
Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice retired Javed Iqbal, Mr. Justice retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. Mr. Khalid Naseem, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Etizaz Ehsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Etizaz Ehsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना, ट्यूजडे को गाड़ी कर देंगे ना, सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे, अभी नंबर कर देंगे, उसको लाओ उसी का रखें, नंबर करेंगे तो फिर इंटरनेबिलिटी का इशू है ना, उन्होंने तो उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना, जब तुम्हारा तो पर्सनल इशू है मिस्टेक बनेगा तो उसको दिन सुन जाएंगे कि पर्सनल मेंटेनेबिलिटी नहीं हुआ था, देख लो. अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same, office objection also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons, and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब, और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे. Missing/enforced. नहीं, वो वाले केसेस जो है ना, वो हम नहीं अटेंड करेंगे. आपको बता रहे हैं अभी से. हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं. इनका भी लिखने टू बी नंबर्ड. That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases. They set and establish a pattern, and that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. देखिए, I know, देखिए, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then देखिए, एक सेकंड ठहर जाइए ना. That doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort,
your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे, लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे. अगर देखिए, अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे. तो फोकस हम यही रखेंगे. मैं पर्सन का ब्रॉड स्कोप है. अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे. मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है. जी सर, तो आप करिए अर्ज. जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे 2 जुमले तो अर्ज कर लें. चले करिए. मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है. ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन. ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है. दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फर्क हबीब था या कोई. इट इज द न्यू मोड ऑफ On what basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जांपल Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am then here. On what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए. सर 4 लोगों के नहीं है ये. 4 लोगों के आपने नाम लिखे. 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं, अभी आगे पढ़ लें. आगम और भट्टी 2 तो यही है. Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the दूसरे केस में हमने किया है. नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है. नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे. वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला. इसमें तो नहीं किया, वो दूसरे केस में. My lord, it was in this case. हाँ? It was in this case. इसी में ही था. नहीं, वो वाला केस, वो जो कंटेम्प्ट वाला था. नहीं, इसी में नोटिस हो गया ना वो. हाँ? इसी में था. इसी बलोच मिसिंग पर्सन. A long day, but वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग long day for you, पर्सन. I know. चले हम ये बात भी देखते हैं. अच्छा, वो और क्या रह गया था? The commission is directed to submit comprehensive report and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है? फिर हम बाकी चीजें बाद में कर लेंगे. कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से, आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने. कुछ बातें रह गई हैं तो हम इसको बताएं. कितना टाइम दें आपको? क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंग्जाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट, वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी, फिर आप क्या करना चाहते हैं. तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें. तो अब एक इनसे पूछते हैं. दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी, मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न्ड विद दैट. सॉरी, बुरा ना माने शोएब साहिन साहब,
ہم نے کہا تھا جی یہاں سے جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، انہوں نے کہا میں لا رہا ہوں پٹیشن، میں امینڈ کر رہا ہوں اس کو، انہوں نے نہ لائے پٹیشن اور نہ امینڈ کیے. اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا بنیادی حقوق ہے، اگر وہ کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو دھکے مار سے ڈنڈے مار سے ان کو اٹھایا جائے. نہیں، ان کو بہت رسوا کر رہے ہیں، بہت رسوا کیا ہے. ایک سیکنڈ سر، آپ نے تو نہیں لیا ہے نا، انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے، نہیں کیا انہوں نے پورا وعدہ. ہم اب اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیس سارٹ آف ٹیکٹکس employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent, they have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. Absolutely. ٹھیک ہے, that's their fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if and if you can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You are already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. یہ بلوچ جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا جی, جسٹ میں نے وزٹ کیا سر, اٹ از اے پیتھیٹک اسٹیٹ آف رات کو تقریر نہ کریں, کاغذ کا ٹکڑا لائیے, فائل کیجیے پٹیشن. وہ مسٹر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. اچھا, اس میں یہ ڈیٹ کون سی دے رہے ہیں؟ یہ بتائیے اٹارنی جنرل, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. ہاں, یہ آپ کو دیں گے, کتنے دن میں آپ دے سکتے ہیں پہلے بتائیں. ان کو یہ پوچھ لیتے ہیں سے, خالد صاحب آپ کتنے دن میں ان کو دے سکتے ہیں, تاکہ وہاں خالد صاحب کتنے دن میں آپ ان کو دے سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا دے دیں, ٹائم دے دیں 2-3 بھائی آپ کو کتنے دن میں ان کو کم از کم 3 ہفتے دے دیں, چونکہ ہمارا اسٹاف ہے ہم بات کر رہے ہیں یار, ایک رپورٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نا. نہیں 2-3 ہفتے میں کیا ہے, ایک ہفتے کا کام ہے, 8-10 دن میں کر لے, 8-10 دن میکسیمم. کتنے سر کتنا ٹائم؟ 10 days. 10 to 15 days دے دیں پھر سر. 10 to 15. within 10 days. ٹھیک سر, یہ 10 days میں آپ کو دیں گے, پھر آپ کتنا ٹائم لیں گے؟ So if they can share production orders in, let's say, within 10 days. share production orders جلدی شیئر کر لے. رپورٹ انہوں نے 10 دن میں دینی ہے, پروڈکشن آرڈرز 2 دن میں آ جائیں گے. آپ ہمیں the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days کے بعد 2 weeks. No, 2 weeks from now. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈیٹ تک لکھ لیں گے, اپنا ذرا دیکھ لیں گے. پروڈکشن آرڈرز میں ان سے لے لوں گا 2 ہفتے میں رکھا. preferably. مسٹر فیصل صدیقی, If your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes. یہ کوئی general report no, we don't want numbers. یہ ہمیں, آپ ہمیں نام دیں گے سب کے, بلکہ ان کو دیں گے. سر ایک گزارش اور ہے صرف جی, وہ یہ ہے, وہ فخر الدین جی ابراہیم کا کرتے تھے کہ منڈے اگر فکس کرنے لگتے تھے کورٹ, تو وہ کہتے تھے منڈے نہ ٹیوزڈے کا. ان سے پوچھتے تھے جب جج صاحبان کہ وائی ناٹ منڈے, تو وہ کہتے تھے کیس تو پتہ نہیں چلے نہ چلے, پر سنڈے خراب ہو جائے گا تو ٹیوزڈے. ایسے یہ بتائیے اعتزاز صاحب, آپ ہمارے سامنے کبھی آئیں اور آپ کا کیس نہ چلا ہو؟ نہیں. ایک ایگزامپل دیتے ہیں. نہیں, اگر نہیں چلا تو آپ کی ایڈجرمنٹ کی درخواست آئی ہوئی ہوگی. ہماری طرف سے ہم پورا بورڈ ختم کر کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں 3:30 بجے, ٹھیک ہے. اگر آج ہم آپ کو دیر تک سنتے ہیں, مگر آج ہماری JCP کی میٹنگ ہے, Very grateful. وہ 3 بجے رکھی ہوئی ہے. Otherwise we try to finish the board, at least I try to humanly possible. One of our colleagues is not well. She is seriously unwell and she's come and sat in court. چلیں کے بارے میں ایک بات کرنی تھی, بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں. ملٹ صرف ایک بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں, پروٹیسٹرز کے بارے میں بات کرنی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پٹیشن پینڈنگ ہے ہماری وہی ریکویسٹ کریں. آپ نے کچھ نہیں فائل کیا, مگر ہم نے اٹارنی جنرل کو آلریڈی کر دیا ہے. so far a responsible